Make in India in Aatmanirbhar Bharat to make for the globe. India's defense sector is undergoing a tremendous makeover. On Sunday, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of C-295 medium transport military aircraft manufacturing unit. This is the first aircraft manufacturing facility in private sector in the country. The PM said the day when India will build big passenger aircraft for the world is not far away. भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। भारत पहले से ही काफी देशों में विमान के छोटे मोटे पुर्जे पार्ट्स निर्यात करता रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है। Which will be built in Vadodara. This facility, a key step towards achieving Aatmanirbhar defense, will be run by Tata Advanced Systems Limited and Airbus Defence and Space, Spain. Honorable Prime Minister, your clarion call to the Indian industry to make our nation Aatmanirbhar has been a truly inspiring one. The C-295 program will kickstart a defense-focused private industrial ecosystem in this country, and its execution will create thousands of jobs and a robust local supplier base. Tata will manufacture 40 aircraft in pole-bound Gujarat's Vadodara, which will generate over 25,000 jobs. The aircraft can carry up to 71 passengers or 50 paratroopers. India is the 35th country to use C-295. इस फैसिलिटी में निर्मित C-295 एयरक्राफ्ट सुपीरियर कैपेबिलिटीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। यह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करेगा। The nearly 22,000 crore project will make the Indian Air Force the largest operator of C-295 transport aircraft in the world. With Saurabh Bakhtania and Manjeet Negi in Vadodara, Bureau Report, India Today. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.